Good morning, dear students. Dear students, in the previous class we have discussed about the mechanism of breathing. Breathing, the process which involves inspiration and expiration. That is, inhaling the atmospheric air and releasing out the air from the lungs. In this process, both the diaphragm and the intercostal muscles of the ribs play a very important role. During inspiration, the muscles of the diaphragm contract and therefore cause the increase in the thoracic cavity. The ribs moves upward and outward. This also helps in increasing the thoracic cavity in dorsal ventral axis, due to which overall thoracic cavity increases and therefore pulmonary cavity or pulmonary volume also increases. Increase in volume is responsible for lower air pressure in your lungs, and due to this less pressure of air, we inhale. Same way, whenever the diaphragm and the ribs come back to their original position, thoracic volume and the pulmonary volume reduces, due to which the pressure of air in your lungs increases, and that is responsible for your exhalation. A normal healthy person will be respiring for 12 to 16 times in a minute, right? And this all measurements are being done by using an instrument called spirometer. A spirometer is used for measuring the amount of air that you inhale and exhale. So today we are going to discuss about the topic respiratory volumes and capacities. अब respiratory volumes मतलब क्या होता है? Respiratory volume is that every time when you inhale and every time when you exhale, there is a fixed amount of air that is being taken in and taken or removed out. When you forceful inhale, then also you will be able to inhale up to certain limit, after which you cannot further continue to inhale, right? Then after what is mandatory? Exhalation is mandatory. That indicates that our lungs are having a particular volume of air that can be taken in and removed out. And this all air which is taken in or removed is measured by spirometer, and it is referred as our respiratory volumes. तो हम सब में respiratory volumes थोड़ा बहुत fluctuate होता है, पर more or less it is going to be same for all the individuals. So we are having certain definitions which are very important, and these are being discussed today in this lecture. So first we talk about the first volume. We are first talking about respiratory volumes. Okay, I'll give the heading respiratory volumes. Now respiratory volumes means the first one that is included is called tidal volume. The first one to remember, that is tidal volume. The tidal volume means the normal amount of air or the normal volume of air which any individual inhales and exhales. Okay, so the volume of air that is inhaled and exhaled normally. मतलब नॉर्मल कंडीशंस में, राइट, जब हम कुछ कर नहीं रहे, when we are ideally sitting or just we are walking, there will be certain amount of air that you are going to inhale and a certain amount of air that you are going to exhale, and this volume is called as your tidal volume. The amount of air which you inhale normally and the amount of air which you exhale normally is known as our tidal volume, and it is 500 ml. Means 500 ml of air is being inhaled and 500 ml of air is being exhaled. Now we know that a normal person breathes for how many times? 12 to 16 times, and therefore the normal tidal volume per minute is going to be 6,000 to 8,000 ml. राइट, क्योंकि 500 ml एक इनहेल में है
अब हम 12 टाइम्स ब्रीथ करते हैं नॉर्मली इनहेल एंड एक्सहेल, तो 12 into 5 डायरेक्टली हम कर लेते हैं. सो वी गेट अ वैल्यू ऑफ 6000 to 8000 is the amount of air that we normal inhale and we normal exhale. But do we always inhale normally? No. Certain times when we are doing some exercise or we are doing some type of meditation, we take some amount of air forcefully also. हम ज्यादा forcefully भी air लेने का try करते हैं in certain conditions, and that is known as our inspiratory reserve volume. So second definition is inspiratory reserve volume. Now inspiratory reserve volume is the amount of air that we take in forcefully. मतलब हमने नॉर्मल तो एक्सेल इनहेल कर ही लिया है, राइट? पर नॉर्मल इनहेल के बाद हम कितना फोर्सफुल कितना एयर हम ले सकते हैं, सो दैट इज नोन एज अवर इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. At most of the places you will see the short forms only. हर जगह पे TV या IRV या ऐसा ही लिखा होगा, so you will have to remember that also. Inspiratory reserve volume. So it is the volume of air that is forcefully inhaled. Okay, after a normal inhale. तो नॉर्मली तो इनहेल किया है, मतलब 500 को गिनना नहीं है. इट इज आफ्टर अ नॉर्मल इनहेल, मतलब नॉर्मली आपने 500 ml ले लिया है, बट व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर यू कैन टेक, एंड दैट इज अबाउट 2500 to 3000 ml. 2500 मतलब एक नॉर्मल इनहेल लेने के बाद when we forcefully add air in our lungs, so that is called as inspiratory reserve volume. Just like inspiratory reserve volume, there is also some amount of air which we can forcefully exhale. During certain exercises, we force our lungs to release more amount of air, and that is the expiratory reserve volume. The expiratory reserve volume. Okay, so expiratory reserve volume will be your ERV. Okay, so the volume of air, forcefully exhale, मतलब नॉर्मल एक्सेल होता है तो 500 होता है, पर फोर्सफुली आप कितना एक्सेल कर सकते हो, तो इट इज 1000 to 1100 ml, right? So tidal volume is your normal volume of air that you inhale and normal volume of air that you exhale, but inspiratory reserve volume is after a normal inhale. The additional amount of air which you take in your lungs is called inspiratory reserve volume. Similarly, there will be additional amount of air which you can forcefully exhale out of your lungs, and that is known as our expiratory reserve volume, and the value is 1000 to 1100 ml. The next one is known as residual volume. The residual volume, that is RV. Now क्या होता है कि कई बार फोर्सफुली एक्सपायर करने के बाद भी देयर इज सम अमाउंट ऑफ एयर दैट रिमेन्स इन अवर लंग्स. हमने फोर्सफुली एक्सहेल किया, पर फिर भी थोड़ी बहुत ऐसी एयर है जो हमारे लंग्स में रह जाती है और वो इजीली मेजर नहीं होती, एंड दैट वॉल्यूम इज कॉल्ड अवर रेसिड्यूअल वॉल्यूम. So the volume of air, or you can say the amount of air that remains in our lungs after a forceful exhale. मतलब आपने फोर्सफुल एक्सहेल किया, मतलब क्या किया, ईआरवी तक आपने एयर रिमूव कर दिया, पर फिर भी एयर जो है वो हमारे लंग्स में थोड़ा बहुत रह जाता है, एंड दैट इज नोन एज
residual volume, and the value is 1100 to 1200 ml. So these four are respiratory volumes. रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स के कॉम्बिनेशन से बनता है रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज, जिसके बारे में हम अब डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स में टाइडल वॉल्यूम, इट इज द नॉर्मल इनहेल एंड एक्सेल. इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इट इज द फोर्सफुल इनहेल. एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज द फोर्सफुल एक्सेल. And the residual volume is air that remains in your lungs. Remember this, even after a forceful exhale. मतलब आपने बहुत ट्राई किया एक्सेल करने का, फिर भी थोड़ा एयर जो है वो लंग्स में रहता है, उसे कहते हैं रेसिड्यूअल वॉल्यूम. अब इनके वैल्यूज आपको याद रखने पड़ेंगे, बिकॉज रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज जो है they are combination of the respiratory volumes. So next we discuss about the respiratory capacities. So after discussing about respiratory volumes, let us discuss about the respiratory capacities. Now respiratory capacities are going to be the combinations of different respiratory volumes. So the first one is known as inspiratory capacity. The inspiratory capacity that stands as IC. ठीक है, तो inspiratory capacity जो है that is the total amount of air that a person can breathe in. हम कितनी एयर ब्रीथ इन कर सकते हैं? एक नॉर्मल वॉल्यूम प्लस फोर्सफुल ब्रीथिंग, राइट. हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें इंस्पिरेटरी कैपेसिटी पूछा है तो इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ एयर विच यू कैन इनहेल. हम टोटल कितना इनहेल कर सकते हैं? तो टोटल हम नॉर्मल इनहेल प्लस फोर्सफुल इनहेल, दैट विल बी अवर वैल्यू ऑफ इंस्पिरेटरी कैपेसिटी. सो द टोटल वॉल्यूम ऑफ air a person can inhale, right, that should be after a obviously after a normal exhale. ठीक है, नॉर्मली एक्सेल करने के बाद मैक्सिमम आप कितना एयर ले सकते हो? सो दैट इज वेरी इजी, इट विल बिकम योर टीवी प्लस IRV, where your TV is the value of tidal volume, मतलब 500 ml आएगा, right? And what is your inspiratory reserve volume? It is nearly 2500 to 3000, right? So what will be your inspiratory capacity? Inspiratory capacity will be 3000 to 3500 ml is going to be your inspiratory capacity. It includes your normal amount of air which you inhale plus the forceful amount of air which you can inhale. Obviously inhale कब कर सकते हैं? After an normal exhale. Okay. So second value is similar, expiratory capacity. The expiratory capacity, that is your EC. Okay. Expiratory capacity means just like inspiratory capacity, it is the total volume which you inhale. Same way, the total volume of air which a person can exhale. Total volume of air that a person can exhale. Obviously exhale कब होगा? After a normal inhale. मतलब अगर आपने नॉर्मली इनहेल कर लिया है तो उसके बाद आप कितना एयर रिमूव कर सकते हो? यू कैन रिमूव द अमाउंट ऑफ एयर विच इज गोइंग टू बी टीवी प्लस ERV, बिकॉज टीवी इज योर नॉर्मल एक्सेल एंड ERV इज योर फोर्सफुल एक्सेल. सो नॉर्मल एक्सेल वैल्यू वाज 500, राइट, और फोर्सफुल एक्सेल की वैल्यू क्या थी? 1000 to 1100, राइट. So what will be the total volume? 1500 to 1600 ml is the amount of air which is your expiratory capacity.
So inspiratory capacity is the maximum inhale and expiratory capacity is the maximum exhale. The third one that we have to discuss is the functional residual capacity. The functional residual capacity means your FRC. ठीक है? Functional residual capacity. Now the amount of air which remains in your lungs after a forceful exhale was what? Residual volume. But the amount of air that remains in your lungs after a normal exhale will be your functional residual capacity. So it is the volume of air that remains in the lungs after a normal exhale. आप समझे यहाँ पे रेसिड्यूअल वॉल्यूम और फंक्शनल रेसिड्यूअल कैपेसिटी में सिर्फ एक वर्ड का डिफरेंस है. रेसिड्यूअल वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ एयर दैट स्टेज इन योर लंग्स इवन आफ्टर यू फोर्सफुली ट्राई टू रिमूव इट आउट. आप फोर्सफुली भी ट्राई करोगे तो कितनी एयर रह जाती है? रेसिड्यूअल वॉल्यूम. पर फंक्शनल रेसिड्यूअल कैपेसिटी मतलब द वॉल्यूम ऑफ एयर विच रिमेन्स इन योर लंग्स आफ्टर यू नॉर्मली एक्सेल. हम नॉर्मल जब एक्सेल करते हैं तो उसके बाद कितनी एयर रह जाती है? सो दैट इज गोइंग टू बी योर रेसिड्यूअल वॉल्यूम. तो आएगा ही, पर उसके साथ साथ क्या आएगा? एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. क्योंकि एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी हम रिमूव नहीं कर रहे क्योंकि हम यहाँ पे फोर्सफुल रिमूव नहीं कर रहे. राइट, इट इज आफ्टर अ नॉर्मल एक्सेल. सो रेसिड्यूअल वॉल्यूम की वैल्यू और ERV की वैल्यू को आपको ऐड करना है एंड यू हैव टू राइट व्हाट इज योर FRC. ओके, सो फंक्शनल रेसिड्यूअल, और उसके लिए आपको RV की वैल्यू पता होनी चाहिए. इट वाज अबाउट 1100 to 1200 ml. ERV was your 1000 to 1100. You have to just add these values and get a range. That is your functional residual capacity. The fourth one is the vital capacity. The vital capacity is your VC, that is the total amount of air that a person can inhale, right? Or you can say total volume of air that a person can exhale. दोनों ही लिख सकते हो, and that is your TV plus IRV plus ERV because it includes both. Vital capacity मतलब पूरा ही, जैसे कि आप टोटल वॉल्यूम कितना इनहेल कर सकते हो और कितना एक्सेल कर सकते हो. ठीक है, मैं यहाँ पे दोनों ही लिख देती हूँ. तो टोटल इनहेल टीवी IRV ERV, टोटल एक्सेल भी उसमें इंक्लूड होता है, इसलिए टीवी IRV ERV मेंशन करते हैं. वैल्यूज रखने हैं एंड यू हैव टू ऐड देम टू गेट द वाइटल कैपेसिटी. एंड द फिफ्थ वन इज नोन एज टोटल lung capacity, that is your TLC. It is the total volume of air accommodated in your lungs. मतलब हमारे lungs कितनी air accommodate कर सकते हैं, तो वो आएगा TV, IRV, ERV plus RV. चारों TV, IRV, ERV. But TV, IRV, ERV itself is what? It is your vital capacity plus residual volume. You have to just keep the values. मतलब TLC मतलब मान लीजिए पूरी ही कितनी एयर आपके लंग्स एकोमोडेट कर सकते हैं. तो नॉर्मल, forceful exhalation at the residual volume. Everything can be taken within the lungs. So that is your total lung capacity. So these 5 are your respiratory capacities and previously जो हमने 4 डिस्कस किए थे वो थे respiratory volumes. तो स्टूडेंट्स रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज दोनों की वैल्यूज के साथ, डेफिनेशंस के साथ बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखने हैं. In the next lecture we will talk about the process of exchange of gases. Okay, so that is one of the most important topic from this chapter that has to be understood.